Hello बच्चों, let's read the question here. The question says identify the first line of defense in humans. Option A skin, option B mucus coating, option C lysozyme secretion from the eyes और option D all of the above. तो जो की कंसेप्ट हमको इधर समझना पड़ेगा is what exactly is the first line of defense in case of humans. तो इसको समझने के लिए we'll take the example of war. कभी भी कोई भी पार्टी अगर एक वॉर में जाती है वी आर बेसिकली ट्राइंग टू डिफेंड अ फोर्ट. तो ये हो गया आपका फोर्ट. नाउ इन फ्रंट ऑफ द फोर्ट देयर विल बी आर्मी विच इज लेड आउट इन स्पेसिफिक ऑर्डर एंड स्पेसिफिक प्रोग्रेशंस. तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्मी विच आर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द फोर्ट ट्राइंग टू डिफेंड द फोर्ट. जो फर्स्ट लाइन ऑफ आर्मी है here refers to your first line of defense. This becomes your second line of defense and this becomes your third line of defense. And जो fourth है that is nothing but your human body. So these अगर हमको समझना है line of defense क्या है, these are basically like these army which one by one will try to protect the fort. अच्छा, अगर हम समझे enemy which is generally referring to your pathogen here will try to advance to the fort. अभी enemy को fort तक पहुंचना है. It will have to pass the first, second and third line of defense and then it will pass into the fort. तो जो first line of defense है that will be common for all the enemies. This will be your general army which is common for all the enemies, which will mainly include your physical and chemical barriers. So this will be all your physical and chemical barriers which are present basically corresponding to your innate immunity. Innate immunity is type of non-specific immunity, इसलिए सबके लिए सेम होगा. फिजिकल एंड केमिकल बैरियर्स की अगर बात करें इसमें एग्जाम्पल्स भी आ जाएंगे आपके स्किन, देयर विल बी योर म्यूकस and lastly you will also have your tears and also saliva. And saliva and tears में basically there is the presence of lysozyme. So lysozyme also helps in the first line of defense. This becomes the first line of defense. अगर हम second line of defense की बात करें, this again is non-specific and ये particular line of defense will correspond to all the types of cells and proteins that attack the invaders. So it will include the cell and proteins which will attack the invaders. This is again a type of non-specific, यानी कि specifically ऐसा नहीं होगा कि एक एक को they are trying to kill, choosing one and then killing them. It will be non-specific, यानी कि सबको मार रहे हैं वो. So this will mainly include your phagocytes, your macrophages and all the type of WBCs which is mainly trying to provide a barrier. And जो third line of defense है, this is mainly called as an adaptive line of defense. So this is adaptive, meaning this will be specific. This necessarily will be specific. So yes, specific they will try to act specifically on a particular bacteria or a particular pathogen. तो ये क्या होता है कि macrophages signal करेंगे. Once the macrophages have started to signal, what will happen is that specificity में we here have dendritic cells which will pick up the signals from macrophages. ये dendritic cells क्या करेंगे? They will engulf the pathogen. ये पैथोजन को engulf करके lymph nodes में लेके जाएंगे. And lymph nodes में obviously we know we have the T and the B lymphocytes which will completely engulf the pathogen.
So this is a type of adaptive immunity we can say which will act as the third line of defense. तो क्वेश्चन में हमको पूछा गया है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इसमें क्या है. फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑब्वियसली करस्पॉन्ड्स टू योर फिजिकल एंड केमिकल बैरियर्स, मीनिंग स्किन है, म्यूकस कोटिंग भी है, and lysozyme secretion from eyes, particularly from tears. So option D, that is all of the above, should be the correct answer for this particular question. तो अगर हम समराइज करते हैं कि हमने क्या पढ़ा, हमने किया कि एक फोर्ट दैट इज ह्यूमन बॉडी को बचाने के लिए वी रिक्वायर 3 डिफरेंट लाइन ऑफ डिफेंसेस. जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है उसमें आपका स्किन, म्यूकस एंड लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है. और क्योंकि हमको क्वेश्चन में वही पूछा है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है, वी कैन से ऑल ऑफ द अबव, दैट इज ऑप्शन डी शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल. बेस्ट ऑफ लक.